हेलो। ओके नमस्ते, सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान फ्लेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ईच पाल सीरीज में आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर प्रशांत तिवारी हैं, जो कि एसोसिएटेड प्रोफेसर है इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज भारत में। तो जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन के लिए मैं डॉक्टर प्रशांत तिवारी की तरफ चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? नमस्ते डॉक्टर साहब, वेरी फाइन, हैप्पी। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड वंस अगेन। सो आई थिंक ये हमारा सेकंड टाइम है ऑनलाइन सेशन। हाँ जी बिल्कुल, आप सही हैं। ये हमारी दूसरी वर्चुअल बैठक है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आई एम होपफुल कि हमारी फिजिकल भी कहीं ना कहीं पे इस तरह वो मीटिंग हो जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो फॉर द बेस्ट सर। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया कि डॉक्टर प्रशांत तिवारी इज एसोसिएटेड प्रोफेसर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज इन इंडिया। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हमारे देखने वाले और जो सुनने वाले हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, उनको आप अपने अल्फाज में खुद ही बता दें। तो थैंक यू सर। जैसा कि आपने मुझे बताया कि मैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स मैंने इंडिया में ही किया है। पीएचडी मेरी 2019 में मैंने मेडिकल फार्माकोलॉजी में किया है। रिसेंटली जो मेरा थर्स्ट एरिया है वो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। और इन दिस रिगार्ड देयर आर सेवरल प्रोजेक्ट गोइंग ऑन इन आवर लैब। सम ऑफ देम आर पब्लिश्ड, सम ऑफ देम आर पाइपलाइन। और इसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस क्या है, क्या अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब उसका स्टेटस है। दैट इज बेसिकली अ साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल डेटा। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंसेस हमारे होते हैं, और जिसके कारण हमें डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, ऐसी कुछ चीजें चलती रहती हैं लाइफ में। सो दैट इज ऑल अबाउट इन आवर लैब व्हिच वी आर डूइंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। ओवर टू यू। अच्छा, आप इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी में एज अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एज एसोसिएट प्रोफेसर? वर्तमान में मैं दयानंद सागर यूनिवर्सिटी में हूँ, ये बैंगलोर। कहाँ पे है, किस सिटी में है? ये है बैंगलोर में है। बेंगलुरु। ठीक है। जैसे कि जी। आपने कहा कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेस है, तो सबसे हमारी जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, उनको ये बता दें कि व्हाट इज न्यूरोलॉजी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो बहुत आसानी से इसको जानते हैं, और जो नहीं है मैं उनके लिए ज़्यादा फोकस करूंगा। न्यूरोलॉजी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा एरिया है जिसको लेकर के हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो लॉजी मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ न्यूरोनल सेल, यानी मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उनको जानना ही न्यूरो साइंस है, न्यूरोलॉजी है। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं, न्यूरो साइंस कह सकते हैं। या आम जो हमारी बातचीत के संदर्भ में देखें तो ये है मस्तिष्क के कोशिकाओं के या मस्तिष्क के बारे में जानना और समझना। तो जब हम न्यूरोलॉजी करते हैं तो लॉजी मीन्स क्या क्या बीमारियां हैं, मस्तिष्क के कौन कौन से हिस्से हैं जिनमें संभावित बीमारियां हो सकती हैं, या उनका निदान कैसे किया जाए, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन। सो दैट इज नथिंग, इट इज अबाउट आई स्टडी ऑफ न्यूरोनल सेल और ब्रेन सेल्स। यानी यू मीन टू से स्टडी ऑफ ब्रेन एंड डिजीजेस ऑफ ब्रेन एंड एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, पैथोलॉजी ऑफ एग्जैक्टली ब्रेन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। And then my as your area of concern is neurodegenerative diseases, तो थोड़ा सा राइट। शॉर्ट ब्रीफ में बता देंगे कौन कौन सी न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं? वैसे तो बहुत ज्यादा है, कोई शॉर्ट सी बता दें जो बहुत ज्यादा कॉमन है। जी। तो न्यूरो डिजेनरेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है। न्यूरो डिजेनरेशन इंक्लूड्स मेनी थिंग। जैसे मेजर जो हम जानते हैं, एल्जीमा डिजीज। सो एल्जीमर वाज द साइंटिस्ट जिनके नाम पे ये डिजीज है। उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसा फेस किया, कुछ फील किया कि ये कुछ हम भूल रहे हैं, दैट डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, लॉस ऑफ मेमोरी।
So Alzheimer disease is there, Parkinsonism is there, Huntington disorder is there. So there are many causes also. So lifestyle modification है, oxidative stress is one of the cause. जो हमारे सराउंडिंग्स में हमारी खान पान की जो स्टाइल है, हम क्या डिनर लेते हैं, लंच लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, और किस वर्क प्रेशर की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, जिसके कारण हमारे न्यूरोकेमिकल जो सब्सटेंसेस हैं उनमें मॉड्यूलेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, विच लीड्स टू न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीजेस लाइक पार्किंसन। तो आप जो आम लोग हैं जो नहीं जानते ये सब टर्मिनोलॉजी, उनके लिए सीधी सी बात है कि भूलने की बीमारी, याद नहीं रहता है कुछ। पार्किंसोनिज्म में हमारी जो मांसपेशियों की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो घट जाती है, कमजोर हो जाती है। सो इट्स वीकनेस ऑफ मस्कुलर सेल्स। As you said that dementia and Parkinson are very common. तो मैं राइट हॉस्पिटल में जो एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ, तो सबसे पहले इसको ना मेडिसिन के डॉक्टर्स ही डील करते थे। तो नो देयर इज अ सेपरेट राइट सबजेक्ट दैट इज न्यूरो फिजिशियन, जो कि इसको सारा वो डेलते हैं। न्यूरो सर्जन भी देते हैं, लेकिन जो राइट ज्यादा स्पेशलिटी आ जाती है वो न्यूरो फिजिशियन के पास आती है। जैसे स्ट्रोक को वो डील करते हैं, डायमेंशिया का वो डील करते हैं, पार्किंसनिज्म को डील करते हैं, राइट एपिलेप्सी को डील करते हैं। और ये जो डिजीजेज है ये बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। तो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रह गया राइट। कि व्हाट आर द पॉसिबल चैलेंजेस टू काउंटर सेवरल न्यूरो डिसऑर्डर डिजीजेस। It's a very interesting question. There are several challenges. So challenges means how to treat neurological disorders. So major challenges is there bioavailability of drug substances towards brain cell. That is, the drug should cross the blood-brain barrier. Then only it will show the effect. So challenges is the bioavailability of drug substances, delivery of drug substances towards the brain cell, because the neuronal cell is having a 10 AUG brain cell diameters. So that drug has to cross that neurological cells. So delivery means how we can prepare a drug substances. So currently we are using anti-Alzheimer drugs like donepezil is there, memantine is there. They are having the good therapeutic approaches as well as bioavailability. However, their therapeutic utility, poor therapeutic utility is a major challenges. तो इसे काउंटर करने के लिए रिसेंटली बहुत सारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हम यूज करते हैं। नैनो मेडिसिन है, नैनो टेक्नोलॉजी है, फाइटोसोमल ड्रग सब्सटेंसेस है, बिकॉज सिंथेटिक ड्रग्स प्रोलॉन्ग टर्म यूज करने से कुछ भी डिजीज हो, चाहे वो ब्रेन सेल हो या हाइपरटेंसिव हो, किडनी डिजीज हो, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन या क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ड्रग सब्सटेंस का एडीआर होता है, सीवियर एडवर्स इफेक्ट होगा। तो इन्हें मैनेज करने के लिए नेचर इज द ग्रेट सोर्सेस, वी आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर, सो व्हाई कांट वी एक्सट्रैक्ट सर्टेन active components from the medicinal plants, from the herbal plants, and we can deliver those drug substances towards the brain cell by using several technology like phytosomal drug delivery system. So here we can isolate those components, we can load the drug substances in active ingredient can be loaded. It can be prepared by any method. So there are delivery systems. So in such way we can counter those challenges also. So this is the my opinion. However, WHO says many things. As per the WHO predictions to an upcoming 2030, this dementia disorder may be 50 billion people may have a dementia across the globe, and upcoming 2015 it may cross more than 70 and 100 billion people may affect. So these are the only anticipation, it may increase. However, the advancement and treatment and the science we are applying behind it, so this is only assumption and prediction we can minimize. However, still there is a need of lot of improvement, lot of स्क्रीनिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस, बिकॉज ऑल टाइम हम जो एग्जिस्टिंग ड्रग है उस पर डिपेंडेंसी नहीं हो सकती है, रेजिस्टेंस बहुत जल्दी कॉज हो जाता है। एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, बिकॉज इन न्यूरोनल सेल एडिक्शन इज अ मेजर इशू, पीपल में गेट एडिक्टेड। आपको पता होगा कि
हमारे आसपास लोगों को नींद नहीं आती तो वो सिंपल सा मेडिसिन स्टोर पे जाके एक डायज़ेपाम ले लेंगे, सो हो जाएंगे, बट इट इज अ ड्रग डिपेंडेंसी, so which are having a very long severe adverse effect. It may alter hormonal system, it may hamper metabolic system. So in hormones it may alter prolactin, growth hormones. So these are the certain challenges which uh, uh, I Next anticipate. question to Mr. Tiwari is, what are the factors affected by the drug delivery against neurodegeneration? So again, you have prepared a very good question of series. So I appreciate first of all. So there are factors. So we can distinguish a factor in different zone. So we can distinguish as per my opinion, socio-economical factor. Drug addiction is another factor. Drug abuse is another factor. So I can hear you. Your question was regarding the factors affecting neurodegenerative diseases, right now? So there are many factors like drug addiction, drug dependency, drug abuse. Apart from that, हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, तो एक एग्जांपल कुछ ऐसा ही लिया जाए साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए, तो उनको हम एंटी साइकोटिक ड्रग, तो इन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड there are prolactin hormones, growth hormones, folic stimulating hormones, adrenocorticotropic hormones. These are the hormones which are regulated and secreted from the pituitary gland. So any antipsychotic drug will alter the hormonal level, like prolactin. So prolactin level जो है बढ़ जाएगा. So it will be a condition like hyperprolactinemia. So hyperprolactinemia का major drawback क्या है? It causes galacturia. In males, their chest size will increase, right? Galacturia in females, it is known as irregular menstruation cycle. Impotency also it causes, napunsakta. So these many factors are there which are associated with uh, neurodegeneration. Certain factors are indirectly affecting the life. So more or less, drug abuse या misuse substances कौन से these drug substances are being used in the hospital for the treatment of neurodegenerative diseases. However, in second hand, they are also causing severe adverse event, which are alters with impotency. Galacturia means the breast chest size will increase in male. Galacturia, that means it is a irregular menstruation cycle in women. It may lead to impotency. The lack of prolactin hormones may lead to poor lactation in female. So these many factors are associated with antipsychotic drugs. How the challenges can be achieved to deliver drugs towards the brain cells? So there are several strategies. There are several approaches we can counter. So drug delivery system like phytos can do. So this is another technique, repurposing the drug substances to deliver a drug substance. My next question is, what is the role of genetic etiology and endocrinology to manage CNS disorders? So to manage neuroendocrinology or CNS disorder, there are many things. First and foremost things, we have to minimize the drug substances. We have to minimize the uses of drug substance. Natural drug substances can be used. Many medicinal plants are there, like Brahmi we can use. Tinospora cardifolia we can prescribe. So the Tinospora cardifolia stem can be used. कुछ करना नहीं है, एक छोटा सा उसका स्टेम लेना है, पानी में उसको रात में रखना है, सुबह उस पानी को आप ले लीजिए. हालांकि उसके आइसोलेशन में एक टिनोस्पोरा
स्टेपरेलिन इज अ मेजर कंपाउंड जो कि आपके न्यूरोनल डिसऑर्डर को डिले करता है, डिजीज प्रेगोरेशन को मैनेज करता है। सिमिलरली वन मोर इज देयर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे हम इंडिया में हम पलास भी बोलते हैं। स्पेशली होली के फेस्टिवल में उसके फ्लावर्स को हम डिप करते हैं कलर के लिए। So that contains one major component, that is butyrene. So that is present in the root part of the Bupia monosperma. So that root part can also be poured in a water overnight and it can be taken care. Brahmi is there. Brahmi is very useful herbal medicine apart from the synthetic drug. So herbal medicine is also a useful tool to minimize ADR, also to delay the disease progression. My next question is, what are the drugs to be given to manage neurodegeneration? Yes, yes. So like anti-Alzheimer drug, there are many anti-Alzheimer drugs. However, recently two major drugs are being prescribed like memantine, donepezil. So they are having a better efficacy and availability. They can cross the blood-brain barrier. So this can be given. However, there are certain agonistic drugs are also there like bromocriptine, cabergoline. So this can be given. So in the very rightly in the previous question, मैंने बताया कि natural drug substances can be given, and our nature is a great sources of several medicines. So we, due to our poor knowledge or due to negligence, we could not able to address certain things. So we have to calculate and we have to incorporate those medical substance, medicinal plants, herbal medicinal gardens are there. So Ayurveda is there. So in Ayurveda, we can get so many things. So we can opt certain things. Professional like you, experienced people like you should take the challenges and responsibility and come forwards towards the society so that people should get benefited. So this is our role and responsibility to address those collect those information and address these neurological disorders, severe neurological disorders, apart from the traditional. My next question is, what are the failures of conventional drugs with reference to CNS? Yes, it's very good question and a very point-to-point answer. The major failure is blood-brain availability. It can't cross triple B. It is the major failure. Apart from that, there are certain metabolic disorders are also there. Immunological disorders are also there. Because ultimately drug has to reach in the blood substance. Then only it will cross. So their absorption, distribution, metabolism, these are the several factors which are delaying the drug availability towards the brain cell. Because brain is very severe part. Their brain cell diameter is fixed. It is near about, in certain articles they have mentioned 10 AUG. So that lower molecular weight, the polar drug substance can easily cross the blood-brain barrier. So we have to think about what are other polar drug substance and we can isolate also them to enhance the permeability of drug substances. My next question is, can nutraceutical be a choice of things to treat these neurodegenerative disorders? Yes, yes, yes. You are very right, and you are very experienced and knowledgeable. You are the topmost nutritionalist. So you know what are the nutritional factors. So ultimately, nutrition is required. So these are nothing. These are the antioxidants. So body need antioxidant. How we can detoxify our toxins? So food substance is a medium. So we can change our nutritions, whatever we are eating either in breakfast or lunch or dinner. So this is a lifestyle modification, and we can reduce the intake of alcohol, smoking, because all these things people are very much addicted. Even they have a disease, but nutraceutical dinner. So what are our menu? What we are eating? So nutraceutical is no doubt it can be. Apart from that, people should minimize or reduce alcohol intake, smoking, and
they should uplift their life by doing certain meditation or yoga, or they can go for gymming also. At least body will be fit. So what is the reason? Certain steroids should come out. So with these steroids, toxins will come out. So this is nothing. This is all about the day-to-day lifestyle modification. If we are uh, uh, getting early in the morning, so definitely life will be so far so good. So there should be certain goal. We should engage our day-to-day lifestyle with a certain exercise and activity. It can be anything. It may be a homework also. It can be an office work also. So in between, there will be a lot of stress also. So we can manage all these things by nutraceuticals. We can take Brahmi as a juice. We can take Tinospora cardifolia leaf by pouring or soaking in the water. So these many things we can do. Certain other things are also there that we are used to do so many mistakes. So we can minimize all these things. So this is the things which we can do. Thank you, Dr. Prashant Tiwari, on a very fruitful session on neurodegeneration disorders. And at the end, you conclude that nutraceuticals or nutrition is a very beneficial way to treat disorders. There is or you can say lifestyle with lifestyle modification, physical activity, sleep cycle, and having a healthy nutrition. You can overcome these neurodegeneration disorders. And thank you again. And in the future, I will hope to have a very topic on any pharmaceutical sciences, to have a general information like public, to have awareness what is drug discovery, how they can use proper uses of drugs. Thank you, Mr. Tiwari. The opportunity and wonderful session. Good luck. Best wishes. Thank you, Mr. Thank Bye you. bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar. Bye bye. Bye bye.